Last sum of exercise is prove that opposite side of a quadrilateral circumscribe a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. Means एक क्वाड्रिलेटरल है दैट इज सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, तो वो जो सेंटर के ऊपर अपोजिट साइड जो सेंटर के ऊपर एंगल सबस्टेंड करेंगी दैट द सम ऑफ दोज एंगल आर 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री. वी हैव द फिगर ABCD is a quadrilateral circumscribed by this circle with radius R and center O. This point is let O. Okay, the radius is R. We have to prove the opposite side. Let AB and another opposite side to AB is CD. तो जो एंगल AB से सेंटर के ऊपर सबटेंड होगा और जो एंगल DC से सेंटर के ऊपर सबटेंड होगा, द सम ऑफ बोथ एंगल इज 180 degree. Clear? Now come to the solution. First we have given, what is in given? It is quadrilateral ABCD circumscribe to a circle with center O, radius R. Don't write O. Circumscribe a circle with center O, radius R. We have to prove angle AOB plus angle COD is equal to 180 degree, right? और angle AOD plus angle BOC is equal to 180 degree. अगर इन दोनों का सम 180 होगा तो इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए. तो इनमें से कोई भी एक प्रूव कर दें, दूसरे को हम सिमिलरली लिख देंगे. Now come to the construction. Construction में let this point is P, point of contact, this point is Q, this is R, and this point is S. Now join O to P, O to Q, O to R, and O to S. Join O to P, O to Q, O to R, and O to S. Okay. Come in the proof. Oh, come to the figure. See here, in this triangle, you can see in this triangle we have already proved that this angle is equal to this angle. How we proved it? We take two triangles, triangle OPB and OQB. तो इसके बाद हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते थे. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके CPCT से ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाता था. क्लियर? तो वही स्टेप हम यहाँ पे करेंगे. इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये दोनों एंगल इक्वल करेंगे. क्लियर? सो कम टू दिस. इन ट्राइंगल OPB एंड OQB, इन ट्राइंगल OPB and OQB, right? OB is equal to OB. This is the common line. Next, OP is equal to OQ. Both are of radius of the circle. And third point, angle P is equal to angle Q. Both are of 90 degree. Right? These are 90 degree as the point of contact joined to the center. Okay, the angle between radius and the tangent is always right angle. So by RHS, R, H hypotenuse and one side. By RHS, triangle OPB congruent to triangle OQB. Okay, these two triangles are congruent. So by CPCT we can write angle 1 is equal to angle 2. Angle 1, this is angle 1 and this is angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. Clear? Clear? Any doubt? Similarly, we can say angle 3 is equal to angle 4. Angle 5 is equal to angle 6. Angle 7 is equal to angle 8, right here. Similarly, angle 3 is equal to angle 4, angle 5 is equal to angle 6, and angle 7 is equal to angle 8. Clear? Now
You know that as a quadrilateral, the sum of all the angles of quadrilateral is 360 degree. So right here, angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Why? By the angle sum property of a quadrilateral. Angle A is the sum of angle 7 and 8. So angle A can be written as angle 7 plus angle 8. Clear? Angle B can be written as angle 1 plus angle 2. Angle 1 plus angle 2. Right? Now what about C? Angle C. It is angle 3 plus angle 4 and angle D is 5 plus angle 6. So sum of all these angles is 360 degree. Right? You know that angle 7 is equal to angle 8. So angle 7 can be replaced as angle 8 or angle 8 can be replaced as angle 7. But we see we want in this triangle only. So we will write angle 7 in, we'll write angle 8 in place of angle 7. हम एंगल 7 को रिप्लेस कर देंगे, वहां पे एंगल 8 आ जाएगा. सो दिस इज एंगल 8 प्लस एंगल 8. क्लियर? ऐसे ही इस फिगर में हमारा एंगल 1 लाई कर रहा है तो 2 को रिप्लेस कर देंगे. सो एंगल 1 प्लस एंगल 1. इस फिगर में हमारा 4 लाई कर रहा है तो हम 3 को रिप्लेस कर देंगे. सो एंगल 4 प्लस एंगल 4. यहाँ पे हमारा 5 लाई कर रहा है तो 6 को रिप्लेस कर देंगे. सो एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्लियर? It can be written as twice of angle 8, twice of angle 1, twice of angle 4 and twice of angle 5 is equal to 360 degree. 2 कॉमन हो जाएगा. So this is angle 8 plus angle 1 plus angle 4 plus angle 5 is equal to 360 degree. 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. So angle 8 plus angle 1 plus angle 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 180 डिग्री. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके. इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल टेक टू ट्राइंगल AOB and triangle COD. Why we take this triangle? Because in to prove we have to prove this angle, this and this. The sum of these angles is 180 degree, right? So इसके लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? हम ट्राइंगल लेंगे AOB, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा लेंगे ये वाला ट्राइंगल. ओके. सो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. और यहाँ पे कौन कौन से एंगल है? एंगल 1 और एंगल 8 और एंगल O, राइट? सो यू कैन राइट एंगल A, एंगल O, एंगल B is 180 degree. The name of angle A is angle 8 plus angle AOB plus angle 1. Clear? This is equal to 180 degree. Clear? The sum of all three angles is 180 degree. And in above triangle, angle 5 plus angle 4 plus angle O is also 180 degree. So right here angle 5 plus angle 4 plus angle COD is equal to 180 डिग्री. तो 180 वाला पहले वाले ट्राइंगल का हो गया, 180 दूसरे वाले ट्राइंगल का हो गया. नाउ टेक AOB plus COD in the combination, right? AOB plus COD, because we have to prove this equal to 180 degree, so we will take it together. Plus angle 8 plus angle 1 plus angle 5 plus angle 4 is equal to 360 degree. And you can see from equation number 1 the sum of these angles is 180 degree. So angle AOB, angle COD plus angle 8, angle 1, angle 5 and angle 4 is equal to 180 degree. So we can write 180 in place of this angle equal to 360 degree. Now transpose 180 degree. Angle AOB plus angle COD is equal to 360 minus 180 degree. So angle AOB plus angle COD is equal to 180 degree. Clear? Similarly, we can write right here. Similarly, angles it's AOD or DOA. Angle AOD plus angle BOC is equal to 180 degree. That we have to prove. Hence proved. So this is the end of exercise
10.2. I hope you enjoyed it. If you have any doubt, any query, you can comment on us. Please like, subscribe and share. Thanks for watching. Thank you.